Arahato Samma Sambuddhassa. So today is a special kind of session for us that we will be introducing our online guides. How I will kind of go through is that first I'll ask the question, then we can each person can answer. So as I can see on my screen, Megha is there, Pragati is there, and Nutan is there. So then I will ask in this order. Okay. So as I am able to see on the screen, then I'll remember whom to ask the question. So the first question is an introduction. You have to introduce yourself. So Megha, tell us your name and where you are coming from. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vandami Bhante. My name is Megha Taide. I am from Mumbai and currently pursuing my PhD in Pali and also teaching Pali. Yes, and Pragati? My name is Pragati Prabhe. I am doing my MA in Pali and now I am teaching in Pali department. Nutan? Vandami Bhanteji. My name is Nutan Ramchandra Paul. I am from the Mumbai. I have done MPhil in Pali and right now I am doing a research in various fields. Okay, and the next question is, can you tell us a short history of your spiritual journey, like where you did your first retreat or practice and how you have progressed in this thing? Megha? Yes, Bhante. Regarding spiritual journey, if I want to tell, then it started right from my childhood. It started with the questions in mind regarding this birth itself, that what is this human existence, means what is this existence, who am I, what is this body about, what is this fingers, what are these fingers, these hands, everything. There was curiosity, lot of curiosity regarding everything, like regarding so many questions in my mind, and there was lot of emotions related questions, that why this craving, why this anger, and why these attachments, why so much attachments, why people get attached, why people stay together, what is this going on? Correct. So many questions were there right from childhood, and so many things happened while growing up because never got answers to these questions. So it was just a routine life, going to school, then college. Then as you grow up, you enter into new zone of your age, and then again new questions, new things, new curiosities, and then many things happen. And then at one stage of my life, I came across a situation where I was very much scared of my death. Then the question of life and death came. Then what is this death all about? What happens after death? What happens to this body? What happens when this body burns? Does this body hurts? Or does this fire hurt the body? Will I, when I will die, I will also be burnt like this? Then I will feel the fire. So that I was so much frightened of, I was so much fearful of all these things. When I used to see the dead body going, I used to see myself there, but there were no answers. So this fear, these questions of attachments, craving, so many questions right from childhood, somewhere gave me direction. I was always searching something. So first time when my father went for Anapana meditation, Goenka Guruji's retreat, he guided us all that you all should do meditation. And when I first attended my meditation Anapan in the year 2008, so it is 2008, long back. So when I went to this discourse because of my father, and there I started getting few answers out from the lectures that Guruji used to give in the evening. And then I understood that whatever the way, the personality that I am, I don't, there is no problem in me. The questions are very valid and very correct. There are answers that exist. So that from that time, I started becoming positive. Otherwise, I was like, I was feeling strange about myself. Why such questions are coming to me? Because other people are living so nicely, so peacefully. Don't they get such questions?
So then I started getting answers, and then because of my father only, I came to Pali department. He introduced us to Pali. And then when I started learning Pali, I started getting all the answers theoretically, Pariyatti, through Pali literature. And I used to go for a meditation retreat every year. 10 days used to be there. So every year I did meditation, but I used to do, but that tightness, for that 10 days it was good, but sometimes the tightness used to increase. Sometimes it would used to release, but I never understood what is happening. What is happening? So it was just going on 10 days happening. I was doing Pali, but as you say, I couldn't find that release. That release. I was understanding the answers theoretically, but I was not understanding why it is not releasing. So then the year by year it went, each year it went, and difficulty started increasing. Difficulty started increasing in normal life also, in meditation also, because whatever happens in mind, it manifests in life. So the mind was disturbed, so life also was getting little bit disturbed. Nothing was clear. So I was very much confused. What is happening? I'm doing everything right. I'm learning a good thing, Pali literature, and still life is not going in right track. Still, my mind is not peaceful. What is happening? I am reading something good, but still. So I understood that there is something missing in practice. That there is something that I need a teacher, and I am the person that I need a teacher every time. I am the person that I want somebody to teach me. I cannot do just reading books and then following. I'm not that kind. I need a teacher who can explain me my doubts, with whom I can share. And in my life, there was nobody with whom I can share these things, my experiences, what is happening in my mind, what questions are coming. There was nobody, even in Pali, but nobody. There was nobody to answer. So the only way that I was having was to read Pali suttas. So I used to read various Pali suttas to get answers. I used to get answers, few answers theoretically. So I used to implement, and these things have really protected me. This literature have helped me to at least what we say, to abstain from many things. So I was actually, it helped me, but I was really fortunate that in year 2018, I think in the month of December and 2019 Jan, TWIM came to Mumbai. Vimal Ramsi Bhante, Sister Khema, and yes, Bhante, of course, you, Venerable Dhammagavesi Thero. These three teachers came to Mumbai, and we had 3 days retreat in Mumbai University. And these 3 days were magical for me. The lectures, the sessions, I understood that this is the technique that I need. This is going to help me. And after the 3 days, when I came to know that there is a retreat at Yavatmal, I requested Yojana ma'am that I want to go. Anyhow, I want to go. She said that the seats are full. I said, I don't know, but I want to go there. So Yojana ma'am requested Sister Khema. Sister Khema said, okay, let her come. Then when I attended this retreat for 10 days, start at the beginning, I didn't understood the technique, but slowly, I understood the power of metta. What is this metta and how it helps in releasing? How it helps to that release step, that 6 R's, that recognize, then release, relax, then re-smile, return, and repeat. These were all magical things and steps. And also in the lectures, it was always emphasized on let go and the impersonal view. Then I started understanding impersonal view. Oh, this is impersonal view. And we have to let it up. And what is let go? So in practice, I started implementing, and then I started progressing. Then I started understanding this technique slowly. And then I started implementing. And then the second retreat, then the third retreat. And more and more I'm doing this, I'm understanding it more deeply. And now the purpose has changed. Earlier, the purpose was very normal, just to find peace of mind. But now the purpose is much higher than that, because I started understanding it. Very good. That was a kind of very comprehensive. That is what we need.
प्रगति, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, आप जो है हिंदी में आप बताइए। तो क्या है कि कुछ लोग हिंदी में समझते हैं, तो आप हिंदी में बताइए, और नूतन जी आप मराठी में बताइए। तो तीनों लैंग्वेज में हमारा ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो रिट्रीट के बाद में हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम भी करेंगे, तीनों लैंग्वेज में ही करेंगे। तो प्रगति, आप अपने लाइफ की जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी, आप हिंदी में आप हमें बताइए। वंदना बनते। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि जब मुझे समझ में आ रहा था ना, तो फिर मैं सब देख रही थी, मेरे आजू बाजू में नेचर कैसा है, यहाँ पे आजू बाजू में लोग कैसे हैं। अपने अलावा भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स है, फिर यहाँ पे पौधे हैं, फिर ये क्यों हो रहा है ऐसे, हम यहाँ पे क्यों है, फिर जो ये एनिमल्स है जो ये ऐसे क्यों है, हम ऐसे क्यों है, हमें दो आंखें क्यों है, हम इससे देख कैसे पाते हैं, या फिर सुनते कैसे हैं, या फिर ये बोलते क्यों नहीं हमारे साथ, फिर भी हमारे साथ रहते, हम एक दूसरे के समझ सकते हैं। फिर ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ये ऐसी क्यों है, मतलब बहुत सारे मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन थे। और मैं ऐसे खुद में ऐसे सोचती रहती थी कि ऐसे क्यों होता है, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों दिखती हूँ, मेरे माइंड में ऐसे एक ख्याल क्यों आते हैं, मैं बोल कैसे सकती हूँ, मैं सुन कैसे सकती हूँ, ये क्यों जरूरी है। और मेरे घर में ऐसे शुरू से ही, मतलब मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो वो था एक बैकग्राउंड, जो वातावरण कहते हैं वो घर में वैसे था। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि बुद्ध कौन है, ये ऐसे क्यों है, और इनके आजू बाजू में ऐसे पूरा नेचर के साथ ही कनेक्टेड क्यों है। तो मैं मेरे पापा से पूछती थी कि ये कौन है। और मुझे ऐसे लगता था कि शुरू से कि कुछ तो भी कनेक्शन है इनसे मेरे साथ, ऐसा मुझे लगता था। और मैं पापा से ना उनकी स्टोरी पूछती थी रात को सोते समय, और पापा मुझे बताते थे कि कैसे उनकी लाइफ थी। मेरे अंकल थे, वो मुझे बहुत सारे स्टोरी बताते थे। पर जो इंडिया में है ना, बहुत कुछ जो हम सोचते हैं ना, उससे अलावा कुछ अलग है, जो है वैसा नहीं है, कुछ अलग है। और तब मुझे ऐसा लगता कि नहीं, जो मुझे बताया जा रहा है ना, उसके भी अलावा कुछ तो भी है यहाँ पे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों है, पापा बोलते कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे दिया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था कि मुझे इसका आंसर कैसे मिलेगा। मैं चाहती थी नेचर के साथ घूमती थी, पर और सोचती रहती थी, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। जब मैं कॉलेज में थी ना, तभी मेरे अंकल थे, वो उन्होंने मेडिटेशन किया था 10 डेज विपස්සना कोर्स। तो मेरे पापा के साथ वो बात कर रहे थे, तो तभी मैंने उनसे सुना कि उनको कैसे एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद यहाँ पे मुझे कुछ तो भी यहाँ से मेरे आंसर्स मुझे मिलेंगे। और पता नहीं, जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम सोचते हैं, जो जानना चाहते हैं ना, वैसे है ना नेचर हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे लोग हमें मिलते हैं। तो कॉलेज के टाइम में जो हमारी जो पिकनिक जाती है, वैसे हम समर के सीजन, रेनी सीजन के टाइम में पिकनिक जा रही थी। तो फिर इगतपुरी में वो लेके गए। तो वैसे वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं खाली ऐसे सोच रही थी कि मुझे आना था। और तब गोयंका गुरुजी वहां पे आए, उन्होंने कुछ स्पीच दिया। फिर मुझे मिला कि नहीं, मुझे यहाँ पे आना है, मुझे करना है, मुझे यहाँ से मेरा आंसर्स मिलेंगे सब। तो फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया, पर मुझे मेरा नंबर नहीं लगा वहाँ पे। फिर अचानक मेरा नंबर लगा और मैं गई वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगे कि नहीं, ये जो बुद्ध की शिक्षा है, ये जो पाथ है, ये राइट वे है, जो हर किसी को अपना आंसर यहाँ से मिल सकता है। तो फिर तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। हर साल मुझे यहाँ आना है, मुझे इसका प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ मुझे है ना स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। वहाँ पे तब पाली का कुछ 3 मंथ का कुछ कोर्स चालू था, पर वहाँ पे भी कुछ उनकी ये था कि इतना इतना कोर्स होना जरूरी है। और मैं वहाँ पे फिट नहीं बैठ रही थी। तो मुंबई डिपार्टमेंट में मेरी फ्रेंड के साथ में आई थी उसका एडमिशन करने के लिए। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पाली का है कोर्स चालू है, तो वहाँ पे आई। और मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मेरा अभी ये भी जर्नी भी स्टार्ट हो गया है, और मुझे टीचिंग भी मेरा साथ
शुरू होने वाला है, तो मैंने जल्दी से एडमिशन ले लिया। और जब मैंने दोनों ट्राई किया तो मुझे वहाँ पे और आंसर मिलते गए। तब मैं मेरे घर वालों के साथ डिस्कस करती कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसा है कि जैसे कि एग्जिस्टेंस क्या है, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, तो सबको नहीं पता है। जब तक हम स्टडी नहीं करते तो वो नहीं हम किसी को बता सकते। तो फिर वो ऐसे था कि मुझे मुझे पता है पर मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ तो भी मुझे कमी लग रही थी। मैं हर साल मेडिटेशन कर रही थी और जब भी मैं मेडिटेशन नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो भी है कमी, मुझे जाके वहां पे वो कंप्लीट करना चाहिए। जो मेरा पहला मेडिटेशन था ना, विपस्सना मेडिटेशन का, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलतियां वहां पे की थी क्योंकि मैं बहुत टीनेजर में थी तभी। और सेकेंड टाइम जब मैं गई ना, तो वो मैंने गलतियां नहीं की, तो मुझे उसमें और प्रोग्रेस मिल गए, प्रोग्रेस हुआ मेरा उसमें। पर फिर भी जो था कि परियति पटिपत्ति यानी पटिवेदन, जो पटिवेदन का जो पार्ट था ना वो कहाँ पे तो भी मिसिंग था। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रही थी पर उसका ना आंसर नहीं मिल रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं सबसे जानने की कोशिश करती थी, खुद ढूंढने की कोशिश करती थी, पर जो उसका एक्सपीरियंस है, उसका रीजन क्या है, दिया है लिटरेचर में पूरा कि ऐसा है, पर जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि अरे ऐसे हमें देखना चाहिए, इसके साथ ऐसे जाना चाहिए, या फिर आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा था तब तक। तो फिर ऐसा मेरा जो हिस्ट्री था, जो जर्नी था, तो ऐसे मेरा वो स्टार्ट हुआ जो 10 डेज विपस्सना मेडिटेशन के साथ। और फिर बाद में मैंने 2021 में वेंडरबल सिस्टर खेमा और आपके साथ ऑनलाइन रिट्रीट की मेडिटेशन मेडिटेशन। तो अभी नूतन आप बताइए मराठी में, आप यू कैन काइंड ऑफ टेल योर स्टोरी इन मराठी. येस, थँक्यू म्हणतेजी. माझ्या स्पिरिच्युअल लाईफची जी सुरुवात आहे, म्हणजे आता 2 मी इंटरव्ह्यू ऐकलेले आहेत, तर असं वाटतं की प्रत्येकालाच तसे प्रश्न लहानपणी पडत असतात. पण बरेच जण कमी असतात की जे त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधत असतात. तर जेव्हा मी 8वी 9वी 10वी ला होते, तर त्यावेळी मला असे प्रश्न पडले होते, की एखादा व्यक्ती चांगला असतो, अचानक वाईट का वागतो? आणि मग अचानक एवढा रागीट का होतो? किंवा एखादा व्यक्ती खूप दयाळू असतो किंवा सपोज आता माझं मरण झालं, तर मरण झाल्यानंतर मी एक्झिस्ट करते का? आणि मी जर मेली तर त्याच्यानंतर लोकं मला लक्षात ठेवतील का? काय असते काय जर्नी ती? अशा त्या प्रश्नांची सुरुवात झाली होती. आणि ते कसं 10वीचं वय होतं, तर म्हणजे असं मोकळं वातावरण कधी घरामध्ये नव्हतं, की अभ्यास आहे की अभ्यास करायचा. तर मी माझ्या सगळ्या प्रश्न जे आहेत ना, ते एका डायरीमध्ये लिहून ठेवले होते. पण मग नंतर आहे ना, खूप मी त्याच्यामध्ये बरेच टेक्स्ट जे स्पिरिच्युअल टेक्स्ट आहेत, ते मी वाचले पण सुद्धा. पण मला काही प्रश्नांची उत्तरं नाही मिळाली त्याच्यामध्ये. खूप डिफिकल्ट होतं ते अंडरस्टँड करण्यासाठी. आणि मग ते मग असा एखाद्या वेळी एक राग आला आणि मी सगळी ना ती डायरी ना फाडून टाकली. पण जे मनामध्ये जे प्रश्न असतात ना, ते कधीच खोडले जात नाही. ते तसेच होते. मग त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशन झालं. ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर ते प्रश्न कुठेतरी बॅकग्राऊंडला सतत त्रास देत होते, की नेमक्या ह्या प्रश्नांची उत्तरं काय आहेत? काय आहेत? आणि अचानक कळव्या स्टेशनला मला एक असा बॅनर दिसला, की पाली भाषा शिका आणि बुद्धांचा धम्म जाणा. आणि मला असं वाटलं, की येस, मी फक्त नावाने आमच्या घरी आम्ही बुद्धिस्ट आहोत. पण मला बुद्धांची टीचिंग मधला पण नाही माहिती. कदाचित हा असा मार्ग आहे, की जेणेकरून मला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील आणि असा तो प्रवास सुरुवात झाली. मग सुरुवातीला 2 वर्ष सुरुवातीला एम-एला ॲडमिशन घेताना फर्स्ट इयरला तिन्ही टीचिंग्स जे आहेत ते शिकवण्यात आले. पण जेव्हा आपण शिकतो आणि प्रत्यक्ष जेव्हा अनुभव करतो त्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. आणि सुरुवातीला मला 2010ला इगतपुरीमध्ये गोयंका गुरुजींचं 10 डेज विपसना आम्हाला करायला मिळालं. त्याच्यामध्ये असं काहीतरी म्हणजे असं म्हणतात ना, की अरे हां, हेच काहीतरी मी शोधत होते. हीच ती सुरुवात आहे. पण ते
ते 10 दिवस झाले आणि परत नॉर्मल लाईफ आल्यानंतर ॲज इट इज जसं आहे तसं, जसं आहे तसं. काही म्हणजे असं जास्त मला असा फरक नाही जाणवून आला. म्हटलं का असं होतंय? कुठेतरी एक गॅप निर्माण होत आहे त्या ठिकाणी. मग असं करता मग असं ठरवलं, की वर्षातून एकदा तरी आपण मेडिटेशनला आपण जायचं. मग मेडिटेशनला जात असताना 10-15 दिवस इतकं छान वाटायचं. त्याच्यानंतर असं वाटायचं, की नको या जगात यायलाच नको. ह्या जगामध्ये खूप असे म्हणजे म्हणतात ना, की त्या म्हणजे लोकांमध्ये अशी स्वतःबद्दल पण प्रेम नाहीये, असं ते जाणवत होतं. आणि मग असं करता 2018 डिसेंबरच्या शेवटी आणि जानेवारीच्या सुरुवातीला वेनरेबल भंतेजी, विमल अमसी भंतेजी, खेमा सिस्टर आणि धम्मगवेसी भंतेजी यांची भेट झाली. आणि एक असं खूप मोठा चान्स मला मिळाला, की विमल ममसी भंतेंची आणि खेमा सिस्टर यांची सेवा करायला मिळाली. तर त्यांच्याशी बोलत असताना ना इतकं मोकळं वाटत होतं, की अरे, की कसं काय एखादा व्यक्ती एवढं आतुर मनाने देत आहे. नाहीतर काही अशी लोकं मी पाहिलेली आहेत, की ज्यांच्याकडे खूप ज्ञान असतं, पण ते शेअर नाही करत. पण तिथे मला शेअरिंग दिसली आणि त्याच्यानंतर मग असं बोलता मी सिस्टर खेमाने सांगितलं, की "तू ये 10 दिवसाला यवतमाळमध्ये मेडिटेशन करायला." आणि ॲक्चुअली मेडिटेशन काय असतं? मेत्ता मेडिटेशन काय असतं? लव्हिंग काइंडनेस काय असतो? त्याची डीप अंडरस्टँडिंग म्हणजे गहन जो विषय आहे, तो अगदी सोप्या भाषेमध्ये, साध्या सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी जो सांगितला आणि तो अनुभव करून पण दिला ना, तर मी खरंच त्यांचे म्हणजे म्हणतात ना, आपण आभार पण नाही मानू शकत, की त्यांनी आपल्याला काय दिलेलं आहे. म्हणजे असं सुंदर गिफ्ट दिलेलं आहे, की "अरे काही नाही, डोंट वरी, हे त्याचं सोल्युशन आहे, प्रॉब्लेम आहे, हे त्याचं सोल्युशन आहे." अशा पद्धतीने देऊन ठेवलं. आणि ती जर्नी हळू स्टार्ट झाली. आणि ती चालू झाल्यानंतर जे आजूबाजूचं जे वातावरण होतं, ते अनिच्य काय असतं म्हणजे म्हणतो ना, की प्रत्येक गोष्ट ही काय असते अ, तशीच्या तशी नसते. ती सारखी बदलत असते. तो बदल मी पाहिला. म्हणजे हा जो बदल आहे, हा मी माझ्या स्वतःपासून ते माझ्या घरापर्यंत, ते माझ्या ऑफिसपर्यंत मी सर्वांमध्ये पाहिला. आणि त्याच्यामध्ये नंतर मग कोविड आला आणि कोविड आल्यानंतर तो सगळ्यात जास्त जो बदल आहे, तो मी कोविडमध्ये पाहिला. कोविडमध्ये जेव्हा म्हणजे बाबा खूप आजारी होते. म्हणजे त्यांना कोविड झाला होता आणि ते 76 वर्षाचे होते. तर तेव्हाही मन आहे ना अस्थिर नव्हतं, शांत होतं, की जेव्हा विमलमसी भंतेने सांगितलं होतं, की एखादा व्यक्ती जेव्हा जातो, तेव्हा त्याला आपण मेत्ता दिली पाहिजे आणि मेत्ता दिल्यानंतर जे वातावरण असतं त्या तिकडचं इतकं आनंदी असतं. तेव्हा मला ती गोष्ट पटली, की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा जन्म होतो, तेव्हा आपण साजरा करतोच. मग एखाद्या व्यक्ती जर जात असेल, तर ते का नाही साजरे करायचं? आपण आपल्या अटॅचमेंटसाठी त्या व्यक्तीला का थांबवायचं असं. आणि नंतर जेव्हा म्हणजे माझे बाबा माहितीये मला बेडवर आहे, तरी पण मी त्यांना मेत्ता देत होती. सगळेजण म्हणजे माझे सगळे जे पॅरी फॅमिली आहे, त्यावेळेस सगळे मेत्ता देत असताना मी तो जो आनंदाचा क्षण म्हणजे ते आनंदमय वातावरण असतं, ज्या ठिकाणी कोणताही प्रकारचा मी नाहीये. सगळेजण एकत्र आलेले आहेत आणि ते फक्त हॅपीनेस शेअर करत आहेत. तो एक अनुभव करायला मिळाला. त्याच्यानंतर असं करता म्हणजे 3 रिट्रीट झाले मेत्ता मेडिटेशनचे आणि झाल्यानंतर एक छोटासा अनुभव म्हणते जे मी तुम्हाला सांगते आत्ताच्या रिसेंटली मेडिटेशनमध्ये, की मी असं मेडिटेशन करत असताना रस्त्यावर आहे ना एक छोटासा फ्लायर होता म्हणजे एक छोटासा असा मोठा एवढा किडा होता तिथे हिरव्या रंगाचा आणि तो माझ्या चालण्याच्या मार्गावर होता. तर मला असं वाटलं, की अरे मी ह्याला जर इग्नोर केलं तर कोणीतरी येऊन त्याला मारेल. त्याच्यापेक्षा मी एक सुकं पान घेतलं आणि त्याला वरती चढू दिलं आणि एका बाजूला सोडलं. म्हणजे मी पहिल्यांदा त्या प्राण्याचे एक्सप्रेशन पाहिले, की तो ॲक्चुअली असं त्याने हां, म्हणजे तो जो प्राणी होता ना, इतका आनंदी होता, की म्हणजे थँक म्हणत होता. आणि मी म्हटलं, "येस, आय कॅन फील द नेचर." म्हणजे नेचरचा मी अनुभव करू शकते, की नेचर काय आहे. तेव्हा कळलं, की येस, निसर्गाचा हा एक भाग, निसर्गाला समजून घेणं हाच एक धम्म आहे आणि ह्याची जी सुरुवात आहे, तर अगेन मी विमल वंशी म्हणते आणि खेमा सिस्टरांना खरंच मी थँक्स म्हणते आणि तुम्ही एक माध्यम झालात, धम्मगवेसी बनते झालेले आहात. तर मी खरंच
म्हणजे मला एक खूप चांगली संधी मिळाली की मी माझा अनुभव या ठिकाणी शेअर करते. थँक्यू सो मच. So I'll just summarize for the other two of our guides also, that the questions are always there at the childhood, that what is the life and how these things are working. And by kind of going to the Goenka retreats and by learning Pali, there was a lot of questions which are kind of came were answered by going to Goenka retreats and doing Pali. But at some point of time, there was a limitation which kind of was coming across. Then when they did metta meditation through Bhante Vimal Ramsi, Sister Khema, they kind of came to kind of know that those limitations can of knowledge can also be gone beyond, and more knowledge and more understanding kind of pursue, they can increase that. So that has been the journey for all, and it has been a kind of a very fruitful journey. So now I just wanted to ask, after doing TWIM, how the life has changed. Give us some stories or real life example. That Nutan also told a story of saving a animal and then kind of feeling the gratitude. And there's Bhante Vimal Ramsi who had told a story about a sick person whom he advised that take some chickens from the butcher and leave it in the forest. So when they took the chicken and then they released the chicken ran, and then they turned back. The chicken turned back and saw the person who has released it. And the person actually felt the gratitude of the chicken, and the chicken kind of ran away again in the forest. So this is not a kind of a unique one incident. It happens and one can feel it. So it was a very good kind of a reminder about that story. So we'll start with Megha. Yes, Bhante. There are so many things that have changed. Means I have changed the entire outlook of seeing at the things. The pattern of reacting has changed. Means I'm seeing the changes around me. People are changing now around me. People are. I'm sharing metta with everybody, and I can see their approach towards me is changing. And it is really surprising for me because I'm doing nothing. I'm not doing anything, but still everything is now changing. The same atmosphere is becoming pleasant for me now. It is not that troublesome or not that problematic for me. And the one thing that I have witnessed in myself is that the things that I used to carry for years and years and years, now they're not now they are not there for a moment. They're just and then they're gone. So I'm really surprised. Such things I used to carry for years and years and years, for 10 years, for 15 years. We carry so many things, so much of hurt. If somebody hurt you, then that hurt you carry for 10, 20 years, 25 years. But now if such things happen, it does not stay with me. It is really amazing because now it is like it is evaporating. Everything is it comes, but it does not harm me. Attacks are happening. It is not that the situations have changed. Situations are same, but they are not able to harm me. I am becoming more and more immune. Okay. and I always feel that this nature is there, that something is helping me. That I have read one sutta in Anguttara Nikaya, Natha Sutta, where Buddha says that make your Sila only your Natha, your protector, your refuge. Earlier, I used to feel that there is something that is helping me, but now I'm slowly understanding that it is that power has come from me only. It is coming from my understanding, that the understanding that is developing in my mind, that is helping me now to overcome the problems that I'm encountering. I have understood the power of forgiveness. It is so powerful that I experienced it in this retreat. I felt like I understood why Buddha gives so many similes, because the person experienced that after that only that simile comes. These are not only the similes for giving. I felt as if this forgiveness is like
cleaning all the corners, going inside the corners, cleaning, and metta is coming like a wave of sea, which is just taking everything out and throwing it outside of the sea. Means cleaning process, that this complete cleaning, how it happens. That time I understood why Buddha gives so many similes. Because it happens like, because we feel it like this, like that way. I was so amazed when I experienced that forgiveness. Oh, I said, wow, this is something different. Forgiveness, forgiving self, forgiving others, forgiving everything. It is like magical. I understood why forgiveness, why metta, and how it helps you to move ahead. Also, Bante, when I just came back from the retreat at night time, we got down at LTT. So I boarded a rickshaw. All at the station, all the rickshaw wala were charging rupees 350 to go to university. But in actual, if you go by meter, it is only 40 rupees. So I took one rickshaw. That rickshaw, he was taking me by meter. But when I sat inside the rickshaw, he was very angry. He was very angry. Means he was normally angry because he was driving throughout the day. So I just sat and I was just giving him metta, that may he be happy, may he be peaceful. I was just sitting and and when he dropped me at my center, and when I got down, he was so polite with me. Madam, itna hua. I was so surprised that this person, when I was just sitting, he was so angry, he was so agitated and irritated. When I'm getting down, he's so silent, quiet, and so calm. I was really surprised. And also, I have, as in the last retreat, in my second retreat, I have experienced the strength of metta. When I was having fever and I was sleeping in my room. In the morning time, I didn't came for morning chanting. I felt as if Sister Khema came at my room, and she was just moving hands over my head, and she was saying, "Okay, Megha, take care, don't worry." And I was just sleeping with my blanket on. And then I came down in the afternoon to have and then I came down for breakfast, and I met Khema, Sister Khema. I said, "Why did you came up? Your legs are paining. You shouldn't have come up there." Sister Khema said, "I didn't come up, but I was feeling I should come up there. I should just pamper you. So I was giving you metta." So that experience was really, because it was so real. I can still feel that touch. I can still feel that touch, that she was moving her hand, and I could see her walking up the stairs with her stick until my room. Even though I was in blanket, I could see that image entering my room, sitting. It was so, I still don't believe, because Sister Khema said that this is metta. When you really do metta for someone, that person can sense you there. So it is very, very powerful, that if people, and it is loving kindness. Loving kindness is a need, because if you start loving yourself, why you should love yourself? And when you love yourself, how it flows, and how it flows to everywhere, then there is not a single person who remains. Because you understand, when you know the higher, when you know it's higher, what you say, that why we are doing this, then these all things feel very small, little. This anger, this irritation, we feel so minute that we cannot waste time here. We don't have much time. We learn to forgive everybody, because we don't have time, and we understand that this person is ignorant. Then the compassion comes for that person. May this person understand the teachings of the Buddha. May this person understand, and may he also get this knowledge. May he grows in Dhamma. And we feel from inside that may this person understand. If this person will understand, this person will be good with us and with everybody. Now I understood, if you want that, if you want somebody that person should behave good with you, you just give metta to that person. Why? That person has to behave good with you, because he does not have any option, because nature works in this way. Bhante, there are so many experiences, but this is what in practical life, I understood that meditation is not just sitting at one place and doing it meditation. It has to be done daily, and moment to moment, it is there. It is continuous process. I will stop here, Bhante, because so many. Yes,
No, no, that was very good. I remember Bante's example also. When Bante's Guru U. Silananda was ill, he was in Burma and Bante was in America. So Bante used to daily send metta to his teacher. Then after a month or two, he got a physical letter. Their email, he did not have email and everything. And I think that era was not of email. He got a physical letter. His teacher was thanking him for sending metta, and Bante had not written him a letter or anything. He was just sitting and sending metta, and he felt the metta and he kind of thanked him by letter, and he used to rarely write letters. So that is a kind of an example of Bante also, that you can feel the metta from afar. So it was a very good experience. And one of the things Sister Khema used to teach is also the Dhamma in a car. There is a video also on her channel that when she was in the car and the person was upset, she taught him about the impermanence. So it's a very good kind of sharing. So Pragati, आप अपना कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस जैसा है वो आप हिंदी में बताइए. ओके. जो मेरा जो एक्सपीरियंस था जो मेडिटेशन के साथ, मेत्ता मेडिटेशन के साथ, वो बहुत अलग है, क्योंकि मेरा जो रिट्रीट हुआ वो ऑनलाइन हुआ था. और जो मेडिटेशन का जो एक रहता है माइंड में कि आपको आर्य मौन रखना है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करने हैं. और वो जो टाइम था वो कोविड का टाइम था, और वो टाइम में ना बहुत लोगों को बहुत कुछ रियलाइज हुआ. मेरा भी वैसे ही चल रहा था. मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसी रियलाइज हो रही थी. मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ तो भी ऐसा, और मुझे वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक पर्सन है घर पे और वो जाता है बाहर और वो नहीं है. तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपना ये जो लाइफ है, जो जीवन है, ये जो अभी का टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और तभी मुझे ऐसे लगी कि नहीं, मुझे कुछ तो भी करना चाहिए मेरे साथ. मेरा जो ये टाइम है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे यही टाइम में कुछ तो भी करना. शायद इंटरनेट का है प्रॉब्लम. So currently there is an issue with, I think, the internet from Pragati. So we'll in the meanwhile speak with Nutan. So Nutan, please tell us what are your experiences after doing the meditation, the metta meditation, and some kind of life experiences. You can share it in Marathi. Yes, Banteji. हो Banteji. ऍक्च्युली जेव्हा मेत्ता मेडिटेशन केलं म्हणजे 2019 पासूनच त्याची सुरुवात झाली आणि असं वाटतं की कुठेतरी त्याची प्रोग्रेस झालेली आहे. आता तर असं होतंय की म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर शील घ्यायचं आणि शील घेतल्यानंतर मेडिटेशन करायचं आणि मग जायचं. म्हणजे प्रत्येक वेळी जर माझं माइंड मला म्हणजे त्याचं शुद्धीकरण करायचं असेल तर मला ते सकाळी करणं गरजेचं आहे. आणि रात्री झोपताना न विसरता जे काही दिवसभरामध्ये कुशल कर्म केलेले आहेत, चांगली गुड डीड केलेले, मेत्ता दिलेली आहे, ती सगळ्यांना शेअर करायची. इव्हन ह्याच्यामध्ये मी जेव्हा आले तर आल्यानंतर मला बरेच लोक माझ्या बाजूला बसले आणि म्हणाले की तू अशी खूप छान दिसतेस, अगं खूप हॅपी दिसतेस, काय तुझं हसण्याचं कारण काय, आनंदाचं कारण काय आहे. आणि काही दिवस झाले आमच्या ऑफिसमध्ये थोडीशी काय म्हणतात वातावरण थोडं विस्कळल्यासारखं होतं. पण मग मी मेत्ता द्यायला सुरुवात केली आणि मेत्ता दिल्यानंतर मी प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरचा आनंद मी पाहू शकते. इव्हन म्हणते मला आता असं सांगायचंय की रिट्रीट मध्ये मी जेव्हा सांगितलं की मला खेमा सिस्टरना मेत्ता द्यावीशी वाटते आणि मेत्ता दिल्यानंतर मी बऱ्याच जणांना मेसेज पण केला, ती मेत्ता कन्वे पण केली. तर काही जणांना मी केला नव्हता. तर काहींनी जेव्हा मला फोन केला, अरे नूतन मला ना तुझी ना 2-3 दिवसापासून खूप अशी आठवण येत होती. आणि नंतर मला कळलं की अरे मी 2 दिवसाआधी मी ह्या व्यक्तीला मेत्ता देत होती. आणि त्यानंतर कालच मला खेमा सिस्टरांचा मेसेज आला की मी टू सुद्धा, म्हणजे त्यांनी पण मेत्ता शेअर केली त्यांची. तर मला इतका आनंद झालाय आणि असं वाटतं की ही प्रत्येक गोष्ट जो बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो इतका बदललेला आहे की प्रत्येकाच्या प्रती ओके
तो रागच नाहीये, म्हणजे असं राग असण्याचं कोणतं कारणच नाही राहिलेलं. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती इव्हन मी माझ्या ऑफिसमध्ये बाहेर एक पिऊन असतो, त्याला मी एक विंड शीटर गिफ्ट दिलं, कारण का ते थंडीमध्ये उभे राहतात 24 तास आणि ते बघून मला खूप अशी हे वाटलं, वाईट वाटलं. मग मी त्यांना दिलं आणि जेव्हा मी दिसले नाही तेव्हा म्हणाले, "मॅडम मैं आप कहाँ पे गए थे? आपको मैंने देखा नहीं, आप ठीक हो क्या?" आणि त्याचं जे चेहऱ्यावरचं जे हास्य आहे, म्हणजे मेडिटेशन करताना मी त्या व्यक्तीला पण मी मेत्ता दिली होती. सो आय कॅन म्हणजे हे जे बदल आहेत, हे बघितल्यानंतर असं हे म्हणजे ते भंतेंचे पुस्तक आहे ना, लाईफ इज मेडिटेशन अँड मेडिटेशन इज लाईफ. तो एक अनुभव मला इथे हे काय मिळतं शेअर करायला मिळतं. इव्हन अजून एक इथे एक अजून आहेत ऑडियन्समध्ये एक व्यक्ती आहेत. तर त्या व्यक्तींची पण मला अचानक मला अशी काळजी वाटायला लागली आणि अचानक म्हणजे असं मनामध्ये काही नव्हतं आणि मेत्ता सुरुवात झाली. सुरुवात झाल्यानंतर जेव्हा मी त्यांना कॉल केला, "अरे बाळा, माझी थोडी तब्येत ठीक नव्हती." तेव्हा मला कळलं की येस, मेत्ता अशा ह्याने ती वर्क करते म्हणून. आणि खूप छान अनुभव आहे. म्हणजे स्वभाव बदललेला आहे, अ, वागणूक बदललेली आहे. समोरच्याला समजून घेण्याची जी पात्रता आहे, म्हणजे विचार पातळी आहे, ती बदललेली आहे. म्हणजे आता असं झालेलं आहे, की समोरचं काय करण्यापेक्षा मी कसं किती चांगलं करू शकते आणि हेच माझ्या हातामध्ये. तेच मी जास्तीत जास्त ह्या मेडिटेशनने, मेत्ता मेडिटेशनने मी करू शकते. धन्यवाद. So we will open because I was going to ask one more question about what is the difference. I think you have kind of incorporated that answer in your journey of this thing, that how this metta meditation was different, and your experiences also. I think Pragati has also come, so we will ask her journey. So आप जो है ना, आपका जो ये है वो आप एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं। जब उनका नूतन जी का खत्म हुआ, आप एग्जैक्ट टाइम पे आए, तो आप अपना जो स्टोरी है आप बताइए। सॉरी, पहले मैं सॉरी बोलती हूँ। नहीं, कोई सॉरी नहीं। हाँ, तो ऐसे हुआ था कि मुझे ऑनलाइन रिट्रीट करना था और डिपार्टमेंट थ्रू 3 डेज का वर्कशॉप रखा था मेत्ता मेडिटेशन का। और तभी ऐसा था कि मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बात कर सकती थी और मेरे बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन थे और मैं डायरेक्टली सिस्टर खीमा के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। पर तभी ऐसे हो रहा था कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए था। मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि मेरा कुछ तभी वहाँ पे रुक गया है। और उसके बाद शायद से 1 या 2 महीने बाद ऑनलाइन रिट्रीट का हुआ था। तब मैंने ऑनलाइन रिट्रीट ज्वाइन कर ली और मुझे पता नहीं था कि कैसे होने वाला था, ऑनलाइन रिट्रीट क्या है, कैसा है, क्योंकि माइंड में ऐसा था कि जब हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो आर्य मौन रहता है कि किसी के साथ बात नहीं करना है, कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो फॉलो करना है। और घर में मैं कैसे करूंगी, वो भी मेरे माइंड में कुछ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे लिए एक ट्रीट है, मेरे लिए चांस है और मेरे लिए ही है ये ऑनलाइन रिट्रीट है, ऐसे मुझे तभी फील हुआ ऐसे। और मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने स्टार्ट किया मेत्ता मेडिटेशन, तो मैंने देखा कि अरे जो चीज है, जो आप उसका एक्सपीरियंस करते हो तो आप कितने चेंज होते हो, अंदर से कितने चेंज होते हो और आपका बिहेवियर कितना चेंज होता है। लोग आपके साथ कितने अलग अलग बिहेव करते हैं और अपने जो आंसर्स है ना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इस एक्सपीरियंस के साथ उसको आप समझ सकते हो, ऐसे क्यों होता है या फिर मैं ऐसी क्यों हूँ, लोग ऐसे क्यों है। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि लोग ऐसे क्यों है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। और जैसे जैसे हम लोगों के साथ रहते हैं ना, तो वैसे हम उसी नेचर के हो जाते हैं। तो मेरा भी वैसे ही हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत रूड हो गई हूँ और बहुत एंग्री हो गई हूँ। मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा बहुत कुछ चेंज हुआ है और मुझे उससे बाहर भी निकलना था। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस था कि वो मेत्ता मेडिटेशन करने के बाद मेरा जो राग था, जो द्वेष था ना, वो जा रहा था और मैं उसको फील कर सकती थी। और वो जो ऑनलाइन रिट्रीट था उसमें मैं
हर समय मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे कैसे देखना है, कैसे जानना है, कैसे सोचना है। और जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं तो वहाँ हमें एक टाइम रहता है मेडिटेशन करने के लिए, पर मुझे मेरे घर में वैसे नहीं था। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मुझे उसके साथ भी रहना था, उसको भी टाइम देना था। तो जो भी मैं टाइम मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन के लिए बैठती थी, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद का जो टाइम था ना मेरा, तो वहां पे मेरा मेडिटेशन चालू हो गया था। जब मैं काम करती थी, जब मैं खाना पकाती थी, या फिर मेरे बच्चे के साथ मैं खेलती थी, या फिर मैं वॉकिंग करती थी, किसी के साथ बात करती थी, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेडिटेशन खाली 1-2 घंटा बैठना नहीं है। मेडिटेशन ये है कि आप हर घंटा उसको, वो माइंड में रहना जरूरी है, वो सती संपन्न होना जरूरी है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हर वक्त मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। जब मैं बात करती थी तो मुझे होता था कि अरे मैं कुछ तो भी गलत बोलने जा रही हूँ, तो वहीं पे मैं स्टॉप करती थी। या फिर मैं कोई ऑब्जेक्ट देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे मेरे आगे मेरे संखारा कैसे बढ़ेंगे, वो उसी टाइम मुझे वो रियलाइज हो रहा था। तो मेरे लिए वो बहुत अलग था, अलग एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। वो मेरा सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। और वो टाइम में ऐसे हुआ कि मेरी जो आंटी थी, वो बहुत बीमार थी, उनको कुछ पैरालिसिस हुआ था। और वो टाइम में हम किसी को जो बीमार लोग हैं उनको हम मेहता नहीं भेज सकते थे। पर तभी ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे वो करना है, और अपने आप मेरा वो हो गया था। और मैंने बाद में सिस्टर खिमा को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया है करके, तो सिस्टर खिमा ने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसके बाद ऐसे रिजल्ट हुआ कि जब पे उनको मैं मेहता देती थी ना, तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स आता था कि वो कुछ तो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ तो भी बात कर रहे हैं, या फिर कुछ तो भी उनकी हलचल हो रही है ऐसा। तो मुझे ना वो बहुत ऐसे था कि अरे यही है परियति, पति पत्नी और पतिवेदन। जब मैं सुनता सुनती थी, क्योंकि जैसे हम फिजिकली बैठते हैं तो तभी एक अलग माहौल होता है वो समझने के लिए, जानने के लिए। उस ऑरा में हम होते हैं, वो माइंड स्टेट में हम होते हैं। पर जब मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर सुनती थी, तो जो मैंने पहले जो पढ़ा है पाली में, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था। जो जो वर्ड्स रहते हैं, उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है और जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत अलग होता है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तभी आप जान सकते हो कि अरे वो क्या है, वो मेहता क्या है, वो फीलिंग क्या है, वो वेदना क्या है, और आपको कैसे वो जानना है, कैसे उसको छोड़ना है, क्या, या फिर उसके साथ कैसे रहना है, या फिर सती संपजन्य कैसे होना चाहिए अपने डेली लाइफ में। और ऐसे हुआ कि मुझे ना, फिर मैं काम करते करते ही मुझे ना बहुत सारा एक्सपीरियंस होने लगा कि जैसे मैं कपड़े धो रही थी, तो एक कपड़ा बहुत ऐसे गंदा था, तो फिर मैंने उसको साबुन लगाया और वॉश किया। तो तब मुझे ऐसे फील हुआ कि अपना जो माइंड है ना, वो ऐसे कपड़े के जैसे रहता है, वो निर्मल होता है। पर हम क्या करते हैं, उसमें राग द्वेष मोह वो जमा करते रहते हैं। वो कपड़े की तरह, जैसे हम कपड़े पहनोगे और आप डेली उसको साफ नहीं करोगे, तो वो जो मैल है उसमें जम जाता है। फिर आपको बहुत उसको रगड़ना पड़ता है, बहुत साफ करना पड़ता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें माइंड पे भी ऐसे ही काम करना चाहिए, डेली आपको उसको क्लीन करना चाहिए साबुन की तरह। या और जितना वो बैठ जाएगा अंदर, तो आपको उतना ही उसको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप उसके डीप में चले गए तो फिर आपको वो फेंकना पड़ेगा, और या फिर आपको खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जैसे मैं खाना बना रही थी, तो तभी मुझे पता चला कि जो फ्लेम रहता है ना, वो कितना मीडियम होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या फिर स्लो होना चाहिए। तो कुकिंग प्रोसेस में कितना उसका टेम्परेचर जरूरी है, वैसे अपने मेडिटेशन में भी जो मिडल जो है, वो पाथ बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप हाई इसमें जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप सैर बैर हो जाओगे, आपको खुद के आंसर्स नहीं मिलेंगे। स्लो जाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपको मिडल में रह के सबको जानना, उसको प्रॉपर उसको जो मसाला है उसको डालना, वो बहुत बराबर। जरूरी है।
मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हो रहे थे कि अरे क्या हो रहा है। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही थी ये दोनों के साथ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। और एक बार तो ऐसे हुआ कि जो चींटियां थी कुछ तो भी खाना लेके जा रही थी, तभी ऐसे लगा मुझे कि जो लोग हैं हम भी ऐसे ही है। मतलब एक का काम नहीं है धम्मों को आगे बढ़ा के लेके जाना, तो हमें भी ऐसे वो चींटी के तरह है ना, जो धम्म है वो अपना फूड है, हेल्दी फूड है, तो हमें सबको वो कैरी करना चाहिए और उसको हमें हमारे साथ लेके जाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस मुझे आते हैं। और उसी टाइम में ऐसे हुआ कि मेरे घर में एक प्लांट था जो इमली का था, और वो पूरा है ना ऐसे सूख गया था। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि अरे ये क्यों सूखा है, ये सूखना नहीं चाहिए। तो फिर मेरे मम्मी ने वो काट डाला था एक्चुअली। तो फिर भी मैं उसको पानी देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद है ना उसको छोटा सा एक लीव्स आया और अभी वो बहुत बड़ा हुआ। तभी मुझे पता चला कि अरे जो हम किसी के साथ मित्रता शेयर करते हैं, किसी के प्रति हम अच्छा सोचते हैं, किसी के प्रति हमको लगता है कि नहीं इसका अच्छा होना चाहिए, इसका भला होना चाहिए, ये भी ये जीवन में आना चाहिए, तो वो कितना पॉजिटिवली होता है। वो आगे का पर्सन है, अगर आगे का कोई भी जो इंसान है वो कितना पॉजिटिवली लेता है, उससे पता चला। और एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे घर में यहाँ पे सुबह सुबह चिड़िया और सब कौवे आते हैं, तो फिर मैं उनको खाना देती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि मैंने उनको खाली चावल दिया, जो सूखा था ना, वाइट चावल रहता है वो, और मैं उसको दाल चावल देती हूँ रोज। तो फिर उस दिन उन्होंने खाया नहीं और बहुत वो चू 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 ऐसे चिल्ला रहे थे। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद से भी कुछ तो भी है जो अलग है। तो मैंने जाके देखा कि उन्होंने उस दिन खाया नहीं था, थोड़ा सा ही खाया था। तो फिर मैंने उनको दाल चावल दिया और उन्होंने थोड़ी देर में पूरा खत्म कर लिया। तब मुझे ऐसे फील हुआ कि अरे उनको मैं जानती हूँ, उनके समझ सकती हूँ, या फिर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, पर जो एक कनेक्शन है ना लोगों के साथ वो अलग हो गया है। जो मुझे ऐसा लगता था कि जिन लोगों के साथ मैं रह नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती थी, पर मैं उनके साथ रह रही हूँ। बहुत अलग हो गया है मतलब जो ये रिट्रीट के बाद जो था ना मेरा, ऑनलाइन रिट्रीट के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि अरे ऑनलाइन रिट्रीट में इतना चेंज हो सकता है। दूसरे का मतलब किसी को मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे ऑनलाइन रिट्रीट ने मतलब आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो प्रॉपर आप फॉलो करते हो ना, तो इसका एक्सपीरियंस आपको आएगा। जैसे हम एक रेसिपी रहती है ना कि चाय बनाना है आपको, तो उसमें इतना शक्कर डालना जरूरी, इतना चाय पत्ती, इतना पानी, इतना दूध। अगर आपका कुछ एक मिसिंग हो गया तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे ही है, मतलब जो भी है ना, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर जब हम स्टार्ट करते होता तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो करना चाहिए। तो जब उसका आंसर मिलेगा ना तो आपके सॉल्यूशन भी उसके मिल सकते हैं। तो मुझे ऑनलाइन रिट्रीट से मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरे पर्सनली मेरे पूरा लाइफ चेंज हुआ। मुझे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और फिर मैंने जो फिजिकल रिट्रीट की, तो उसका एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत अलग था। मतलब सबने इतना मेडिटेशन करना चाहिए। अपना जानने का जो तरीका है, अपना जो सोचने का तरीका है, वो समझना बहुत जरूरी है। जो हम 6 आवर से कर सकते हैं कि कैसे हमें रिलैक्स करना चाहिए, कैसे हमें स्माइल करना चाहिए, जो रिलैक्स है पे कितना इम्पोर्टेंट है। और जो रिकॉग्नाइज है कि कैसे हम, हमारे माइंड में कुछ तो भी आता है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम जान भी नहीं पाते कि अरे कुछ तो भी चल रहा है हमारे माइंड में। पर जो मेडिटेशन से ये सब सॉल्यूशन मिल जाता है। और सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस आने के बाद जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। ऐसे लगता है कि हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आनंद बनते हैं, जो पटीचे समुपपाद समझा रहे थे, तो तभी ऐसे फील हुआ था कि नहीं, जो बता रहे हैं ना मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ऐसा है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसका आप एक्सपीरियंस भी करोगे। तो ऐसे मेरे बहुत मुझे फायदा हुआ ऑनलाइन रिट्रीट और फिजिकल रिट्रीट से भी। So I'll just kind of explain some of the similes she had kind of shared. One was that like a white cloth, if it is not washed daily,
then what would happen is dust will accumulate and it will become more and more dirty. So you will have to wash a lot to kind of clean it. So in the same way, our mind also, if they are not cleaning it daily, it will get more and more dirty with all the unwholesome thoughts. And the other simile she gave of the cooking, that the flame for the cooking should be right. It can be not too low, or it will take forever to cook. It cannot be too high, then it will burn the cooking, but it has to be in the middle. So then the cooking can happen. And in the ingredients also, which is put in the cooking, has to be in the proportion. If the ingredients are put in proportion, you will get the, so in the same way, the ingredients in your meditation also has to be in proportion. So that is a very good kind of example she has given. One other example she gave was about the plant. The plant was very dry and it had been cut off. So she started giving her it water and fertilizer. And then what happened is the plant grew and became big. In the same way, when you are doing metta, it may start out small, but when you keep on doing it, then it can blossom. So very good and very relevant examples has been given. So it was an excellent way of kind of knowing. And why saying that while seeing the dependent origination being taught, she could kind of relate to that. So that was also a very kind of a good mind state, that when you can, from the theory, you go to the practical ability to understand. And she has started with the online, and she kind of progressed a lot of in the online retreats. So we will also have them conduct online retreats. Megha is there, Nutan and Pragati will be conducting online retreats. We'll be asking them about dates and everything, and we'll be putting them off in our Twim Asia group and all the other channels where we have. We are kind of starting out with on Facebook, I think, and Instagram and all those things. Kirana is there over here. She kind of helps us. She's currently in Taiwan and a part-time. She's working now, so she has some time, so she kind of devotes it to the Dhamma work. So we need other people also to come and kind of be volunteers and can share their time to kind of promote the work of Dhamma. So that is a very good session we had with the introduction. So we are opening this up for questions. So if somebody has question, they can ask directly to Megha or Nutan or Pragati. So do anybody have questions? Hello, sir. Yes. मला हे विचारायचं आहे की आपल्या जवळचे जे व्यक्ती असतात त्यांच्यासाठी आपण मेत्ता शेअर करू शकतो का मेडिटेशन केल्याच्या नंतर? Yes, one Nutan can answer, Megha can answer. हा, मेत्ता आपण आहे ना आपल्या जवळच्या लोकांसाठी करू शकतो, पण रिट्रीट मध्ये जर तुम्ही आलात ना, तर त्याची एक प्रोसिजर आहे की फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण स्वतःला मेत्ता देतो, नंतर आपण आपल्या कल्याण मित्र स्पिरिच्युअल फ्रेंडला देतो. तर असं करत करत त्या स्टेप्स मध्ये तुम्ही पुढे पुढे जाऊन मग आपल्या रिलेटिव्हला ते जातं. तशा टाईपने ते प्रोसिजर आहे, म्हणजे रिट्रीट मध्ये जर तुम्ही केलात तर. म्हणजे एका सेटिंग मध्येच ते होऊ शकेल की कसं काय, की म्हणजे प्रोसेस फॉलो नाही, ते कसं आहे ना, ते तुम्ही कसं प्रोग्रेस करता ना, त्या हिशोबाने टीचर तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स देतात. तुम्ही जर फर्स्ट स्टेप केली तर मग टीचर सेकंड स्टेप देईल. जर तुम्ही स्वतःला मेत्ता देऊ शकलात, तुम्ही स्वतःसाठी लिव्हिंग काइंडनेस करू शकलात, तर मग तुम्ही सेकंड स्टेपला जाता तुमच्या स्पिरिच्युअल फ्रेंडसाठी, आणि मग तुम्ही तिथे जर केलं तर मग ते पुढे पुढे तुम्हाला ते इन्स्ट्रक्शन्स मिळतात. ओके, थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Any other questions? Bhanteji, there is a lot of question in chat box. Maybe Kirana sent 10 questions. So anyone, if you want to ask, Nutan, you kind of choose any one question and answer that. Okay, I'll try.
when you are taking precept, okay, precept, it is a protection from for to purify your mind. If you want to really purify your mind, na, then you should away from the smoke and the bad habits. You should take up precepts, then you can meditate. Without precept you can't meditate. Then you can understand ki what is the importance of the virtue, that is a sila. Nowadays also I know the each and every, it is not the words, it is actually meaning. When you are sitting on the sitting for the meditation, then you can realize it is not a verbal saying. If you are saying any verses of the Dhammapada, it is actually they are these verses is uplifting your mind when you are purify your mind. So I just request that ki yes Kirana, you when you are starting only one sila, only one, I'm not saying that ki 5 sila. If you are trying for the one sila, then you can change your mind, you can change your perspective of your life. Thank you. So one question I'll ask to Pragati. जो मेडिटेशन है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आपको शिक्षा क्या मिलती है मेडिटेशन से? मेडिटेशन से ये शिक्षा मिलती है कि अपना जो स्वभाव है, जो हर टाइम चेंज होता है, हम रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्ट क्यों करते हैं और हमें क्यों नहीं करना चाहिए, एक स्टेबल माइंड में हमें कैसा रहना चाहिए, सती में कैसा रहना चाहिए, तो हमें ये मेडिटेशन से सीखने के लिए मिलता है. So the answer was that when you are doing meditation, you come to know how to respond and how to react with the situations and how to stay in awareness, in mindfulness. And that is the greatest lesson for a meditation. So Bhante, I would like to one more sentence yes, in your in the Pragati's answer. Ki, when you are aware of your situation, then when your mind is mindful, then you know ki what you want to do. You will not make a trouble for you. It's everything is will be clear. Like when folks will go on your road, then you can see the road. It's like that. Very good. Thank you. Very good addition. So I'll ask one, will meditation really help my health, intelligence and creativity? Megha. Meditation aims at Nibbana. So this the teachings of the Buddha takes us towards Nibbana. So these are very small targets. Of course, they are the small targets that you are going to achieve, and when you will be on the path, you will never think of that when you have that highest target, because these are all byproducts. So they are there. Yes, very good. One new message is there. Very good. So, Bhante, can I ask a question? Yes. Please, we want questions only from the audience. Yeah. Yes, please. Vanda mi Bhante. I'm Sandha Vaidya. Yes. I would like to ask, I'm doing Vipassana meditation. Shall I continue Vipassana meditation and Metta meditation together? It is up to you. See, we don't control your life, or we don't kind of prescribe what to do in your life. It is individuals kind of prerogative that whatever they want to do, they can do. So you have to, what one does has to be for a certain period of time. Say if you are doing a metta meditation, at least do it for a month. So you know what are the changes it is coming. So we are seeing that all the changes which has happened to those people we are speaking now. So that changes has happened because the mind's habits have changed. So to give that time, you have to do one kind of practice for a month or 2 months. One of my kind of monk's friend, or my senior monk who was there, he kind of advised me that whatever practice you take, do it for 6 months. So you know exactly how that practice has affected you, and you will know. But I can say that at least for 1 month you check and do the metta meditation and see how it affects you.
means while doing metta meditation, we should not do vipassana meditation. Yeah, so yes, one you do, and then if you want to do the other, you can do it. We kind of don't stop you from Then- doing anything, but to Then know, to I clarify. have attended 3 days workshop in Pali department. Correct, So I know a little bit about this metta meditation. correct. Therefore, I am asking the same question. That time also I asked this question. Again, while sitting for meditation, I feel what to do, this or that. So we That's can why- give you more instructions. Maybe Megha can give you instructions or something. Nutan is there, Pragati is there. We will have an online option. Before that, we did not have the online option. So we are kind of introducing that. Dr. Madhusudan ji has started one retreat from 1st to 10th January. We may have before that also, we may have one retreat, maybe from 20th to 30th January, we can have a retreat. So please join and learn, relearn, and other things. If you are kind of confident of doing it, then instructions are given on the YouTube channel also, and you can listen to the orientation day talk and start once again. Yeah, Megha, you can also add something. Yes, yes. I just wanted to add. मराठीमध्ये सांगते म्हणते. Yes. हा संध्या मॅडम, तुम्ही आधी आहे ना, सगळ्यात आधी बोला ना. म्हणजे तुम्हाला इच्छा आहे मेडिटेशनची, पण तुमच्या मनात आहे ना दुविधा आहे की मी आनापान करू की मेत्ता करू. दुविधा आहे. हो. हा, तर ती सर्वात आधी आहे ना, ती दुविधा बाहेर ठेवायची. कारण का ह्या दोन्ही पण शिकवणी आहे ना बुद्धांच्याच आहेत, राईट? तर आपण बुद्धांना तर जज नाही करू शकत. मेत्ता पण बुद्धांनी सांगितले, आनापान पण. तर मेत्ता ही बुद्धांनी सांगितलेली शिकवण आहे आणि तुमच्या मनात ते शिकण्याची इच्छा आहे. तर तुम्ही आहे ना फुल डेडिकेशनने ते शिका. तुम्ही आहे ना मनात डाऊट नका ठेवू, की मी आनापान करत होती, मग आता अचानक कसं हे करू? असं नसतं ते. आपले कसे असतात, तर आपण जसं-जसं शिकत जातो तशा अपॉर्च्युनिटीज येत राहतात. आपल्याला आपले ते विपाकच असतात किंवा आपले ते बोलतात ना अपॉर्च्युनिटीज आहेत, तर त्याला घ्या आणि अनुभव करून बघा. जर तुम्हाला ते फायदा होतोय, तुम्हाला कळतंय, तुम्हाला मेडिटेशनमध्ये प्रोग्रेस होते, तर मग ते तुम्ही ठरवायचं, की मी ह्याच्यात हे करू कंटिन्यू की ते करू. पण ते दुविधामध्ये राहिलात ना, तर मग तुमचं मेडिटेशनमध्ये तुम्ही पुढे नाही जाणार. कारण का तुम्हाला नाही, कारण का तुम्ही 2 बोटीमध्ये पाय ठेवणार. तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही मेत्ता करते, तर तुम्ही विश्वास ठेवा गुरूंवर, टीचर्सवर, जे मेडिटेशनचे टीचर आहे त्यांच्यावर फेथ ठेवा, विश्वास ठेवा आणि त्यांचे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करा. इफ यू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन्स, slowly and gradually you will understand what this technique is all about. Just follow the instructions. हळूहळू तुम्हाला कळेल. फक्त डाऊट ठेवू नका. तुम्ही करायचंय ना, तर मग फुल प्रिपरेशन नाही या. राईट? ओके. ओके. थँक्यू मॅडम. You're welcome. Madam, So, any actually, other I have question? more. Yeah. Yes. But actually, I am doing regular practice of meditation, and I am very much aware how to deal with the people in everyday life. Correct. But there are some personalities too deep rooted in my mind. So I am not doing good interaction with them. Correct. Actually, why it is so? And that is a spontaneous reaction within a fraction of second. It's not possible to deal with. Yes. So see, in meditation, not all meditations are born equally. So certain meditations can give you certain insight into your mind. Certain meditation are designed for samadhi, for your mind to be kind of in a focus on a subject. So what we are teaching over here is a combination of both, of the samatha and vipassana. So we are giving you a process where you can understand your mind and understand your habitual tendencies. By understanding your habitual tendencies, you can change your habits. So that is the kind of importance of this meditation and how kind of it affects a person. So as we were kind of giving some examples, Pragati was giving some examples about how she was kind of able to discern the differences in the life. Like she gave an example of the ants. Like everybody can see ants, but they are not getting that idea that, see, as the ants work together, we have to also work together to forward the Dhamma.
So in that sense, by seeing something or by hearing something, you kind of be able to discern what is happening. And that kind of interpersonal relationship, there are certain hurdles which are there, which are there based on our habits. So when we are kind of able to change our habits, we'll change our interactions. So Nutan, can I add something? You want to add something? I also want Yes, to add ma'am. something. Yes. Megha, you first. You add first. You first. You first. Thank you. Okay. I'll explain in मराठी मध्येजी. Mhm. निशिकांत सर, कसं असतं माहितीये का, की काही वेळा ना आपल्याला असं वाटतं की आपण 1 तास बसलेलो आहे, पण आहे ना जेव्हा तुम्ही 1 तास बसता ना, तेव्हा कधीतरी कुठेतरी अगदी छोटंसं जे रिएक्शन असतं ना, ते हळू इतकं मोठं होऊन जातं ना, की आपल्याला कळत पण नाही. म्हणजे असं झालं की मेडिटेशन करताना कुठेतरी मी कधीतरी अशी रिएक्ट केली होती आणि मी असं ठीक आहे असं. पण मेडिटेशन मध्ये पण ते छोटे आपले रिएक्शन आहेत ना, ते इतके हेवी होऊन बाहेर येतात ना, त्याच्यासाठी आहे ना आपण जेव्हा मेडिटेशन आपण करतो ना, तेव्हा आपण आहे ना आपले जे अझम्पशन्स असतात की नाही, की ह्याच्यातून कसं बाहेर यायचं, त्याच्यासाठी गायडन्स हा खूप मार्गदर्शन खूप महत्वाचं असतं. आणि पहिला गोष्ट तर मी सगळ्यांना हे सांगू इच्छिते, की तुमच्या मनामध्ये कुठलाही छोट्या प्रकारचा जरी प्रश्न असला ना, तुम्ही असं म्हणाले काय बावळट प्रश्न आहे, तो विचारा. काही हरकत नाही. प्रश्न विचारला तर तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही आनंदी असाल, तेव्हाच तुम्ही इतरांना तो आनंद तुम्ही शेअर करू शकता. येस मेघा प्लीज प्रोसीड. निशिकांत सर, तुम्हाला सांगते, तुम्ही जे सांगितलं की कधी-कधी माइंडमध्ये असे लोक येतात की ज्यांच्यासाठी खूपच म्हणजे त्यांनी तुमच्याशी वाईट केलेलं असते, तर ते राग जात नाही किंवा असंच होतं ना ते निशिकांत सर? Interpersonal interaction, yes. हां. हा तर बरोबर बोलताय मॅडम. हां, तर अशा वेळेस तुम्हाला एक सांगते मी, की ही जी लोकं असतात ना, हे तुमची खरं तर खूप धम्मामध्ये मेडिटेशनच्या प्रोग्रेसमध्ये हीच लोकं तुमची मदत करणार आहेत पुढे जाऊन. तुम्हाला तुमचं मेडिटेशन किती पुढे गेलेलं आहे, ते या लोकांकडूनच कळणार. जेव्हा तुम्ही मेडिटेशनमध्ये फॉरगिव्हनेस जेव्हा या लोकांना आणि मेत्ता जेव्हा इथपर्यंत देऊ शकाल, त्या दिवशी तुम्हाला कळेल, की तुमची मेत्ता ही डेव्हलप झालेली आहे. तर हे गोष्टी असणं गरजेच्या आहेत आपल्या जीवनात केव्हा-केव्हा. कारण का ह्याच गोष्टी आहे ना आपल्या ती लोकं आहेत ना आपल्या प्रोग्रेससाठी येतात, इतकं लक्षात घ्या. धम्मामध्ये तुमच्या प्रोग्रेससाठीच ते काही घटना घडतात. कारण का जेव्हा तुम्ही मेडिटेशन करणार ना, तेव्हा तुम्हाला त्याचं महत्त्व कळेल, की अरे, हे किती डिफिकल्ट होतं, पण आता का हे मला काहीच त्या व्यक्तीसाठी काही राग किंवा द्वेष असा काहीच उरलेला नाहीये. हे कसं झालं? तर ते आहे ना प्रॅक्टिसमधून तुम्हाला असं कळायला लागेल ना, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा पण जेव्हा प्रॅक्टिस करणार ना, तेव्हा हे तुमचं बेंचमार्क असेल चेकलिस्टमध्ये. तर लक्षात ठेवा, की हे पण गरजेचं आहे. यू विल एन्जॉय धिस आफ्टरवर्ड्स. Very good. थँक्यू म्हणते, थँक्यू मॅडम. So I just wanted to ask, Kunal was also there in our offline retreat, in-person retreat. So I would like to ask him to share his experience also in our retreat. Vandami, Bande, Yes. Vandami, all the teachers and all the Upasak Upasikas. I'm audible? Yes, yes. Okay. First, I did an online retreat, which was in the last year for 3 days with Sister Kema. And again, there was a physical retreat, which was in Ulhasnagar, but I couldn't attend it. The 3 days online retreat, I will frankly speak, मी याच्याबद्दल मी मराठी आणि हिंदी थोडं बोलतो. मी याच्याबद्दल ना बनतेंकडे माफी पण मागितली की मी खूप खोटं बोललो की मला कळतंय मी असं होतंय वाव बिकॉज एव्हरी क्वेश्चन यूज टू कम ऑन दी व्हॉट्सअप आय टू अनालाइज देम अरे दे आर सिटिंग फॉर 20 minutes अरे 30 minutes so I used to just fake the questions because I was not experiencing what is happening with me actually. What is metta, what is karuna, I was just blank about that. But in this physical retreat, I found the instructions given by our teachers were so prompt, up to the mark, that make you change, that make your meditation change gradually, and you can see that what step by step the changes in your meditation day by day in the 10 days. And I have seen my habitual tendencies also changing because
I was very short tempered person. And we meditate first for our enemies also, right? So one question was coming from my friend, how can we meditate for our enemies, yeah? How can give a method to our enemies? But I will give a short, my experience. I was at juice center for taking a juice, and I got the juice. I was drinking very with all the joy and enjoyment. I was drinking the juice, and I heard a sound, and I said, it is a familiar sound. And I just turned around and looked. The person who was, he was my the greatest enemy, was standing beside me. I just stare at her, and I just started drinking my juice. I paid the money, I kept the juice glass and went. I came home, and after reaching home, I realized, Are, I didn't react only. I didn't say any word. I didn't make मी एकही फेस नाही बनवला असा वाकडा तिकडं. जसं आपण रिॲक्ट करताना करतो, फेसेस वी मेक फेसेस लाईक आय एम व्हेरी अँग्री. Didn't react a single line or single word. What is this? So metta really works. Metta really changes your habitual tendencies. And actually, I will tell everyone, come to the online also, and if possible, join the physical retreats also. It will really change your life, your day-to-day life, day-to-day habitual tendencies, and you will find this world is very love, is full of love, loving kindness, and lovely people are around you. Vandami Bante. Thank you. Very good sharing, Kunal. We need this kind of experiences to have more and more people to have these experiences, you know. So that was a very good story about how to react. One story Sister Khema used to say is about in Russia. There was a person who was having a kind of a fight with another person. And it was a very small town in Russia. And whenever these two people used to meet, everybody used to run away because they knew that they are going to fight now. So once after doing a forgiveness meditation, this guy was going to a coffee shop. And the other guy was kind of entering the coffee shop. So people kind of left the coffee shop over there. He said, now they're going to fight. But this person did not react because he had done the meditation and he had kind of forgiven this person. So when the person came, he did not react, and that person said hello by habit. Somebody, you see somebody and you say hello. He said hello, and that other person also said hello. And then they kind of started talking. They said, okay, we'll have coffee. And they started having coffee and they left without fighting. And everybody was surprised that, oh, they met and they did not fight because they did not react. The person did not react. Like Kunal kind of explained that when he saw somebody who he had thought as an enemy, but when he saw the person, he did not react. And that kind of did not escalate or did not create problems. And he could also kind of finish his work and go. So that is what this meditation kind of helps. It's a very good example. So is there any other kind of questions we can kind of have from the audience? Clarifications or something like that? So I think people are shy about asking questions. They can ask in Hindi, Marathi. हिंदी में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मराठी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं. तो अभी जो है ये यहाँ पे किरण ने ये लिंक भी भेजा है. तो हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये लिंक आप सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सारा डिटेल्स देंगे आपको. तो ये आप दूसरे से भी शेयर करना है, शेयर कीजिए. तो यहाँ पे ऐसे आपको मिलेगा. सो आई हैव शेयर्ड अ लिंक. द लिंक एवरीबडी कैन यूज टू एक्सेस द डिटेल्स. सो समबडी कैन काइंड ऑफ ट्रांसलेट इन मराठी आल्सो. वंदामी बनतेजी, बनतेंनी पुढील जे मेडिटेशन ऑनलाईन किंवा
प्रत्यक्षात होणाऱ्या मेडिटेशन प्रोग्राम बद्दल जे वेळापत्रक आहे ते त्याची लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. ही लिंक तुम्ही सेव्ह करू शकता तुमच्या मित्र परिवारांना, कुटुंबांना तुम्ही जितकं तुम्हाला ज्यांना वाटतंय तुम्ही त्यांना शेअर करू शकता आणि प्रत्येक वेळी ती अपडेट पण राहील. येस, येस, येस. YouTubeची पण लिंक तुम्हाला शेअर केली जाईल आणि काही YouTubeवर खेमा सिस्टरांचे, विमलवंती भंतेंचे, नमगवीसे भंतेंचे पण काही टॉक आहेत ते त्याची पण लिंक तुम्हाला शेअर केली जाईल. थँक्यू. तुम्ही जर युट्यूबवर ट्विम टाईप केलं ना TWIM तर तुम्हाला ट्विमचे सगळे व्हिडिओज युट्यूबचे लेक्चर्स रिट्रीट्सचे सगळे तुम्हाला सुत्तांचे सगळे तुम्हाला मिळतील. तर तुम्ही तसं पण चेक करू शकता. You can do it with Venerable Kanti Khema. So if you search Venerable Kanti Khema, our channel will come. The first channel, a complete Venerable Kanti Khema. If you search, you can get the YouTube also. And then we will kind of share, Kirana also shared a link. youtube.com/@Samta Vipassana Trust. So that is under which we are kind of working under Samta Vipassana Trust over here. So that also you can get the channel details. So if there is no other questions, then we will kind of wrap up because it is already 1.5 hours. So it was very kind of helpful, kind of informative kind of session. And I was really happy to see so many people come to kind of share this experience with us. So we will definitely kind of hope that more and more people join us, and we will try and start the online registrations as soon as possible. So we welcome everybody and to kind of join us and kind of learn what is happening. There are transformations you are seeing before you. There were kind of life transformations which have happened, and like we have heard all these experiences for 4 people now. They all were there in the retreat over here in person in Buddhapada in Kalimpong, and they were whatever they have learned, they have also been able to kind of put it in practice, and they are able to understand the Pali terms and by practicing, by first-hand experience, not just theory. Everybody has theory. Many people have theory. Many people have books. There is a whole section in every library and every kind of bookshop of Buddhism. There will be like hundreds of books, but the experience which is there, it is more than all the books in the world combined. So take this experience, take this opportunity, and definitely I think you will have more and more opportunity for getting Dhamma. Sachin wants to share something. There is a hand over here. Hello Bante. Yes. And hello to all. It is very good getting together of all interested people here, and I wish all of them happiness, and I wish them to walk on the path of Dhamma, and definitely they will experience the peace and happiness. Yes. Thanking you all. Very good. Thank you for your sharing. Sweetie, you wanted to kind of share something? No, I have one question. Can you Yes. hear me? Yes, we can hear. Okay, I want to ask a question. What is the basic difference between mindfulness meditation and Vipassana? Yeah, Megha, can you answer that? Mindfulness meditation and Vipassana. When you say mindfulness meditation, what do you exactly mean? I think it is related more with the mind phenomena and concentration, whereas Okay. Vipassana is observing the sensations on the body. Actually, when we talk about meditation, it is related to mind and it is about mindfulness. Sati Sampajanya, what we say in Pali, to be aware each and every moment. When you progress in meditation, that stage comes when you are
aware at each and every moment. You experience very minutely everything. That is mindfulness. That is the higher stage of meditation, right? And Vipassana, when we see, and when you say about Vipassana, you're referring to which practice? As taught by Venerable S.N. Goenka. So when we refer to Goenka Guruji's technique, the object of meditation is Anapana, right? We do see the breathe, we breathe in, breathe out. Our object is breathe. But in Metta meditation, the object is smile, or you can say loving kindness, right? It starts with loving kindness. So object changes here. But the purpose of all the meditation object is still one-pointedness of mind. And when you cross that one-pointedness, and when you reach the stage of mindfulness, what you say as mindfulness, what we say as Sati Sampajanya, that is aware and alert at every moment. After that, the process is same till the higher. When you progress, because the object of meditation has one purpose, to take you to one-pointedness. Are you clear, or do you have a query? Still you have query? Yes, I understood. Thank you so much. Thank you. Yes. So somebody else was also wanting to ask, Virendra ji. वंदना बनते जी, बहुत अच्छा लगा पूरा सत्र जो है, मेघा मैडम, नूतन मैडम और प्रगति मैडम का पूरा एक्सपीरियंस सुन करके सर. और इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस धम्मा फैमिली. और अभी ट्विन का मतलब क्या है भंते जी? TWIM. हाँ, सो ट्विम का मतलब है ट्रैंक्विल विजडम. सो समता का जो है हमारे बनते विमल रमसी जी ने ट्रांसलेशन किया है ट्रैंक्विल विजडम, क्योंकि उसके अंदर ट्रैंक्विलिटी भी है और विजडम भी है. सो ट्रैंक्विल विजडम से समता, और उसके बाद में विपස්සना जो है इंसाइट. तो सो इस तरह से ट्रैंक्विल विजडम, इंसाइट, मेडिटेशन. तो उस तरह से ट्विम, TWIM, ट्रैंक्विल विजडम, Insight meditation. Okay, very good, very good. Thank you very much भंते जी. आप कहाँ से अभी इस समय कहाँ से कनेक्ट? अभी मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हूँ, कलिम्पोंग जगह पे. फिर कल मैं फिर मुंबई आने वाला हूँ. हमारा जेतवन में फिर से एक रिट्रीट है. नॉर्मली मैं रहता हूँ श्रीलंका में, तो रिट्रीट रहेगा या कुछ काम रहेगा तभी मैं इंडिया आता हूँ. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा पूरा आज सत्र देख करके. मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटी कलीग्स हैं, हमारे टीचर्स, प्रोफेसर सब जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे. अभी कुशल जी ने मुझे शेयर किया पर्सनली एंड आई कुड कनेक्ट इट वेरी लेट, अराउंड 10 minutes, बट इट वाज कवर्ड फुल्ली. Thank you very much. We will put this on YouTube tomorrow. So tomorrow I'll share the links. So Megha and Nutan and Pragati can share among the college, all your students and everything. Okay. So you can access that talk, and it was really good. It is worth kind of listening, because they are the experiences are worth its weight in gold. So very good. Thank you for joining. Vandami Bande ji. Vandami, Tirun sir. Thank you. Thank you. So is there any other questions? Bante ji. Yes. Murli here from Bangalore. Yes. Yes. I think the previous question, whatever was asked, according to the Vipassana by Goenka ji, was being elaborated. But how about TWIM Vipassana? Can you give a little bit of insight on that, Bante? Thanks a lot. See, how we kind of explain TWIM is that it is a combination of Samatha and Vipassana that comes in the name itself. So certain meditations kind of have a more emphasis on, say, insight. That means that they want to kind of find out the details of the impermanence is there, the dukkha is there, the impersonality is there, by kind of looking at some phenomena. Then there are other meditations which want to kind of absorb the mind in one subject and make it calm and then investigate.
So they are called samatha meditations. So certain meditations are leaning towards concentration, certain meditations are leaning towards contemplation. But Buddha has said that samatha and vipassana are like two bullocks in a bullock cart. So if a bullock cart has two strong bullocks of equal strength, then it can go in a straight line. So the combination of samatha and vipassana being there in equal weights is the kind of the crux of the meditation which we are giving. That is the reason we have an object of meditation, but we also have the 6R where it is told that you have to relax and smile and be light. So you don't absorb in your object of meditation, but you have enough investigation also from your movement of your mind. Say how your mind is working, you are able to see and get insight into it. And then by relaxing and smiling and coming back, you are able to kind of be on the object. So your collectedness is samatha is also getting kind of developed, and your vipassana is also getting developed. Means you are able to know how your mind is working. So this is a combination of two things that is unique in the Buddha's meditation. I will not call Bhante Vimalramsi's meditation, but Bhante Vimalramsi studied the suttas and found out that the relaxed step is there in the instructions of Anapanasati. And that has not been kind of emphasized by other meditations. So he has brought in back this step of relax, and then smile is a wholesome object. So he has kind of emphasized the wholesome object. So in the there is a sutta Majjhima Nikaya 20 where they say that if you want to kind of distractions are there, then bring up a second object of meditation which is wholesome. So this is the smile. So we keep a smile, we relax, and our mind is light. So we are able to investigate what is happening in the mind, and then we are also coming back to an object of meditation. So we are also developing our samatha. So this develops both the aspects, and that is the reason the progress is very fast over here. So progress is there in all meditations, but over here in this meditation, the progress becomes fast. You can see how much of insight it can generate, and that has been kind of seen by people who have done other meditation for 20 years and come over here, and then they say, oh, it has opened my eyes. And this is, I have also doing some other meditation for say 2 years, 2.5 years. When I came to Bhante, it was like a miracle. In the 7 days, my life changed. So this happens to many people who come to this meditation and do it sincerely, that in 7 days, 10 days, they kind of say that they would never be the same person once again. So that is the kind of power of using the Buddha's teaching and directly taking the words from the Buddha. That is also one thing unique is in our retreats, you will learn from the Buddha's words. So you listen to talks, which are talks where the Buddha's words are read. So you're directly taking the information from the source. So that is also a difference. So somebody wants to add something to this? Nutan. Yes, Bhanteji, I would like to add that when I study the Buddha's teaching very theoretically, that time I didn't understand a single word. But when I attained the metta meditation, when I sat for the meditation, that time I can understood the each and every words with the experience. That was the actually miracle, because every time I heard that thus I heard the number of quantity monks was sitting there and they were enlightened. Then how it was possible? It was that question is it was in my mind. But when I attained that metta meditation, I heard you also, I heard Venerable Bhanteji also, and the Khema sister also. That time I can understand what they want to hear. What is the exactly meaning of these words? I can understand that. So that is the strength of this meditation. Thank you, Bhanteji. So did you Pragati ji, मुझे भी बोलना है कि जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं, जैसे परियति, पटिपत्ति और पटिवेदन है, मतलब हमारे माइंड में रहता है कि मुझे कुछ करना है. जैसे हम स्टडी करते हैं, जो कि मुझे जाना है, मुझे सीखना है, फिर हम एक टॉपिक चूज करते हैं,
उसमें मास्टरी करते, उसकी प्रैक्टिस करते। वैसे ही है, मतलब जो भी हमें अभी मेडिटेशन में करना है तो ये हमारे जीवन के साथ है और जीवन के हमेशा अपने साथ ही रहने वाला है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए कि जो टाइम हमें मिलता है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर सीखने के साथ। मतलब आप थेरेटिकली आपको उसको पढ़ना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है और उसका एक्सपीरियंस करना जरूरी है। उसके लिए आपको जो उसके रूल्स है, रेगुलेशन है, जो सिंसियरिटी है, वो अपने साथ रखना जरूरी है। तभी आप उसमें आगे बढ़ पाओगे, तभी आप खुद में आपकी वो प्रोग्रेस देख पाओगे। क्योंकि ऐसे होता है कि हमें लगता है कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि हम खाली पढ़ते हैं और वैसे सोचते हैं कि मुझे ऐसे करना है, पर कोशिश नहीं करते हैं। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जैसे मैं भी जैसे जब मैंने रिट्रीट ऑनलाइन किया था ना, तो तभी बीच में मेरे आना पाना आ रहा था बीच बीच में। तो तब मुझे थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरा जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो मेत्ता है। क्योंकि मेरी चर्या वैसी है, मेरी चर्या वैसे बन गई थी, पूरा द्वेष रहित। तो मुझे उसके साथ मुझे उसको क्लीन करना है, मेत्ता के साथ मुझे क्लीन करना है। जब आपको आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन प्रॉपरली मिल जाता है और आपको उसके प्रैक्टिस करते हो, तो आप खुद में प्रोग्रेस देखते हो और दूसरों में भी आप देख सकते हो कि आप किसी के लिए ये नहीं बोलोगे कि अरे ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है। आप चेंज हो जाते हो, आप नेचुरली उसको जानने लगते हो, उसको समझने लगते हो, आपका बिहेवियर चेंज होता है, वो क्यों ऐसे हो रहा है, उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो आप एक जो मदर रहती है, जो चाइल्ड के कैसे समझ सकते हैं, ऐसे लगता है कि हम नेचर के साथ वैसे जुड़ जाते हैं मेडिटेशन के साथ। थैंक यू। बहुत अच्छा। What is just last one yes, sentence कि just मैं सबको बताना चाहती हूँ कि this TWIM retreat why it is different। TWIM retreat में सबसे पहले जैसे बंदे ने कहा कि every evening जो भी लेक्चर होता है वो सुत्त पे होता है। पाली त्रिपिटक में जो मध्यम निकाय है उसमें कई सारे सुत्त सिखाए जाते हैं और वो मेडिटेशन के साथ तभी हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं। So that suttas we can understand it more clearly because we are practicing and or every day there is one sutta reading, explanation of that sutta, technical terms with meditation. And other thing, the most important is daily interviews with the teacher. Every day that we have to go to the teacher and the teacher motivates us every day। मतलब ऐसा होता है कि टीचर के सामने बैठेंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 5 क्वेश्चंस, उसमें जब ब्रह्मगवैसी बनते पूछते आज कितने देर बैठे, तो ऐसा लगता है भंते को तो हमको बताना है और फिर भंते को एक बार बताने के बाद भंते आज 1 आवर बैठे, आज 2 आवर्स बैठे, तो भंते ट्राई नाउ हाफ एन आवर मोर, कल मुझे 2.5 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4। तो ये जो मोटिवेशन का फैक्टर है जो टीचर हमको रोज देते हैं कि आप थोड़ा कोशिश करो, पर उसमें फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, प्रेशर नहीं है। अगर आप कर नहीं पाए तो आपको कोई ब्लेम नहीं करता कि ये क्यों नहीं किया, ऐसा होना ही चाहिए था। आपको ब्लेम नहीं किया जाता, आपको सिर्फ मोटिवेट किया जाता है कि ठीक है आज नहीं हुआ और कोशिश करो और कोशिश करो। तो ये जो पॉजिटिविटी का जो एटमॉस्फेयर है जिससे ना हम लोग को नर्चरिंग होता है और फिर हमारे मन में भी फीलिंग आता है कि हमको थोड़ा एफर्ट्स लेना चाहिए। तो वो अपने आप है ना, वो एफर्ट्स लेने का जो तैयारी होता है ना, भले ही हम आए ऐसा लगता है क्या पता कुछ करेंगे नहीं, पर ये जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है ना तो उसमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसा दिखता है कि हमको कोई चिल्ला नहीं रहा। मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता ही नहीं कि जहाँ पे, नहीं तो हमेशा कैसा रहता है, फोर्स रहता है, हमेशा इतना बैठना ही है, ऐसा करना ही है, फिर हमको कहीं ना कहीं मन में खराब लगता है। पर यहाँ पे ऐसा आई हैव सीन दैट इट इज नॉट लाइक दिस हियर। एवरी टाइम इवन इफ आपसे नहीं हुआ उस दिन तो आपको वो रीजन बताएंगे क्यों नहीं हुआ, वो कौन सा हिंड्रेंस है वो बताएंगे आपको कि इस हिंड्रेंस की वजह से, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं हुआ है, तो इसको तो हमको लेट गो करना है। तो हमको छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें पता चल जाती कि अरे ये तो हिंड्रेंस है, अरे ये तो डिस्ट्रैक्शन है, इसको तो लेट गो करना है। और फिर जब टेक्निकली समझ में आता है ना, तो फिर हम एफर्ट्स डालते हैं, हम पॉजिटिविटी में उस मेडिटेशन को लेने लगते हैं, न कि उसको टास्क जैसे लेते हैं। हमको भी पता चल जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं इसको। सो ट्विम इज डिफरेंट क्योंकि टीचर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस।
हमारे साथ टीचर्स है, हमारे पास टीचर्स है, और अच्छे टीचर्स मिलना बहुत दुर्लभ है। मतलब मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, सो टीचर्स है तो सब लोग बेनिफिट ले लो। पता नहीं, ह्यूमन लाइफ बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए, जब तक है ले लो, सीख लो और खुद का प्रोग्रेस करो, और बाकी लोगों को भी आप उसमें बताओ, शेयर करो। इतना ही हम कर सकते हैं। जस्ट थैंक यू सो मच, साधु साधु। I would like to one more sentence. Yes, yes. Sorry, Vanti ji. Yes, yes, yeah, Actually, definitely. if you want to taste of freedom, what is exactly freedom? Then you can come and see ki how you caught up all the situation. Okay, if you want to actually want a freedom, then you have to come and then do it, and then you tell your experience. We are eagerly waiting for your experience. Yeah, very Thank you. good. I just kind of wanted to give a shout out to Hugh also. Hugh is also currently he's not well, but he has kind of agreed to do the online and the physical also. So we may, if everything is right, then we'll call Hugh to India to do a retreat, maybe in Buddhapada, maybe in Deer Park, and we can have physical retreats with him, in-person retreats. So Hugh is there, but I think he is not well, so I'll not kind of ask him to talk. Let him rest. I think he is still kind of logged in to listen to us. So we just wanted to kind of give out this information, and we'll put his details and everything also on the website. So we are more people are joining, and more will be happening. So is there any other questions or anything currently? So if there are no questions, then we can end this session. If Kunal wanted to kind of give the last words. Vandami Bante, once again, sorry to take your time, but No there is a short, problem. very short, we had an experience, three of us, four of us had an experience. We had 2 days after retreat to roam Correct. about seeing Kalimpong or Sway. That's We decided to go to Darjeeling, and we were knowing 3:30 p.m. in the afternoon is the last bus or last car to come to Kalimpong. It takes 2.5 hours to come back. So Oh, we okay. were doing everything in a hurry, and we were reaching the spots, and we were doing that. We at the last spot, we were almost at the 3:30, and we were no, chalo, chalo. We want to go to catch the car, and we want to reach to our Kalimpong. We went there, car was there, 2 people were sitting. The car was like booked for us only, 4 of people. Yes, it was fully booked for us. Then again, when we sat, all the car was car got full with the passenger. 10 of the people came. We were coming back. We were just the teachers were having discussion about meditation in the car, and the driver just turned around and said, "Are you all meditators, Vipassanites?" Mega Ma'am said, "No, we are not Vipassanites. We were here at Buddhapada to do metta meditation." Oh, Buddhapada, Kalimpong. I know that. He was वो हिंदी भाषिक है, कर्मा भाई, और नाम भी कैसा था कि कर्मा, कम्मा। कम्मा थे अच्छे कि हम लोग तीनों चारों उसके कार में बैठे थे। Totally 2.5 घंटा he was talking about Vipassana. We were having discussion on Vipassana. I will really thank to Vimal Ramsi Bhante, Dhamma Sukha, Samatha Vipassana, that they are starting this online retreat in the vernacular languages, the regional languages. And most of the people are asking, अरे मराठी नहीं है क्या? अरे हिंदी नहीं है क्या? थोड़ा इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है. I will, from my heart, I will say thank you to the Samatha Vipassana, the all Dhamma Sukha, all the Bhantes involved, all the guides who are involved in this center. Thanks from all the people, the human beings who are seeking, they are wanting the meditation in their own language. And I will thank you for starting this online retreat in these 2 languages, the Hindi and Marathi. And I hope all the people from this India and the world will enjoy metta and will do the swimming. I will again say,
twinkle, twinkle, little star, you will never know what the wonders your mind have. Thank you so much. Wow, Thank you so twinkle. much. Very good, Kunal. Okay, then we will share the merits and then we can close. May suffering ones be suffering free, Suffering and the free. fear struck fearless be. Fearless. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Vandami Bhante, thank you so much, Bhante. Thank you. Vandami So- Bhante ji, Vandami thank you so much, Bhante ji. Sadhu, sadhu. Vandami And Bhante, thank you so hope much. when we have future this meetings, all will join. We'll Yes, have Bhante. sharing with Megha and Notan and Pragati also. Yes, So we'll Bhante. call Yes, on Bhante. Wednesday or Sundays, and we can have sharing sessions. Okay. Sure, Bhante. Sure, Bhante. Yes, Bhante ji. Thank you once Thank you, again. Thank you so Bhante. much, Thank you. Bhante ji.